स्वागत करता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि हम अपने जो लोअर बॉडी है उसको कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल बनाने के बहुत फायदे हैं। अगर आप अपनी जो अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा बॉडी में, और आपको कभी पेन नहीं होगा, कभी कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको कौन कौन सी योगा है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Sit dandasana, both legs straight and both hands straight, neck back straight and look straight. Okay. Then after firstly joint movements and start toes up and down. Okay. Exhale, toes down. Inhale, lift up. Exhale down. Inhale, lift up. Exhale down. Inhale, lift up. And exhale down. Inhale, lift up. Okay. Then next toes, feet up and down. Exhale down. Inhale up. Exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, and inhale up. Okay. Then 5 to 10 count. Then finish. Then next step, over your feet. Okay. Then start firstly clockwise ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5, and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Then after bend your right leg, catch your thigh, neck back straight, and inhale, lift your left right leg up, and exhale down. Inhale, lift your right leg up, exhale down. Inhale, right leg up, and hold it straight there. 5 count. 1, stretch your leg, neck back straight. 2, 3, 4, and 5. Exhale. Bend your right knee and knee rotation. Firstly clockwise. 1, 2, breathing normal. 3, 4, and 5. Clockwise. 1, 2, and 3. Okay. Then relax. Single leg. 1, 2, and 3. You bend your left leg. Catch your thigh. Left leg is straight. Right leg is straight. Inhale. Lift your left leg up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up, exhale down. Right, last. Inhale, left leg up, stretch your leg, left leg straight and hold still. Hold stay there. 3 count. 1, 2, and 2. Exhale. Then bend your knee and start rotation. Firstly clockwise, breathing normal. 1, 2, 3. Okay, and then anti-clockwise. 1, 2, and 2. Like 1, 2, and 2. Okay, the next, bend your right leg, lift your right leg and over your left thigh. Then neck back straight. And firstly, sink your knee up and down fast. Okay, 10 and 30 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, then exhale down. Inhale up, keep holding. Exhale down, inhale up. Exhale down, inhale up. Exhale down, straight here. 3 count. 1, 2, and 2. Inhale up, straight. 1, 2, and 2. Relax. Okay. Leg change. Bend your left leg over your right thigh. Right leg is straight, neck back is straight. Then firstly shift left knee up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Exhale down. Holding. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And exhale down. Still there. 1, 2, and 2. Inhale up. Still there. 1, 2, and 2. Okay. Relax. And let's shift. 1, 2, and 3. Again, bend your both knees. Okay. On your feet. Then neck back straight and both knees shake up and down. 50 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. आपने continue करते रहना है. Neck back straight. Then after inhale. Exhale, bend your both elbows, then bend forward.
Have a sweep. Then exhale, bend forward. 1, 2, 3, and 4. Slowly inhale. Lift your arms up. Okay. Hold hand back. Roll your shoulder back. Lift your shoulder up and look back. Knees down. Exhale. So inhale, lift your arms up. Exhale, bend forward and neck belly straight. Open your knees. 1, 2, 3, and 4. Slow down. 1 and 2 and neck belly straight. And check 1, 2, and 3. Okay. So I hope आपकी समझ में आया होगा इस तरीके से हमने आपको जो आसन है वो करके दिखाया। फर्स्टली आपको जॉइंट मूवमेंट स्टार्ट करने हैं टो से लेके, ओके, लेफ्ट, देन आपको हाफ बटरफ्लाई एंड फुल बटरफ्लाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा और सर्कुलेट अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ों में पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो आप रोजाना लोअर बॉडी के लिए ग्रो करते रहिए। अपर बॉडी के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लीज उसको भी देखिए। और फुल बॉडी के लिए आप 10 मिनट निकाल के योग कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो।